reactivity series वैसे तो बहुत लंबी, but we just have to remember a few parts of it. So we'll start with potassium. These are the ones that form this reactivity series that we have to memorize. इसके अलावा बहुत से हैं, but हमें याद करने की किसी को जरूरत नहीं है. हाँ, एक चीज आप देख लो कि कार्बन इज here. अच्छा. Now, what is happening here? Down this reactivity series, reactivity decreases. So it becomes less and less reactive downward. Okay, so this tells us that hydrogen is over here. So anything that is above hydrogen is more reactive, and anything that is below hydrogen is less reactive. So ये सारी की सारी hydrogen को displace नहीं कर सकते. But all of these can displace hydrogen. And more importantly, जितना वो hydrogen से दूर होंगे, उतना उनका रिएक्शन तेज होगा, बिकॉज वो उतने ज्यादा रिएक्टिव है, उनका और हाइड्रोजन में उतना ज्यादा डिफरेंस है. सो अगर मैं सोडियम को ऐड कर रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ, तो दिस रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, बट मैग्नीशियम और हाइड्रोजन विल बी स्लोअर देन दैट. तो यहाँ पे जब मैं हाइड्रोजन को सोडियम से डिस्प्लेस कर रहा हूँ, बबल्स आएंगे हाइड्रोजन गैस के, और वो बहुत तेजी से आएंगे. यहाँ पे भी बबल्स आएंगे हाइड्रोजन गैस, बट दे विल बी स्लोअर. और यहाँ पे कोई बबल्स नहीं आएंगे. और बबल्स किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि गैस है. Every time you have a gas coming out, you have bubbles. That's an observation. Similarly, you have a solid. Solid will dissolve. So these are observations here. So solid dissolves. That is one observation. Bubbles of gas. अच्छा, bubbles of gas लिखना खाली काफी नहीं होगा. Bubbles of gas that pops in a flame is a better way of showing that you're talking about hydrogen, because hydrogen का टेस्ट आपने बता दिया. जब भी आप बबल्स लिखोगे तो दैट शोज कि देयर इज अ गैस कमिंग आउट, बट कौन सी गैस है उसका टेस्ट आप साथ में बता दिया. अगर ऑक्सीजन है तो आप बता दो रीलाइट्स ग्लोइंग स्प्लिंट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट आइडेंटिफाइज टू द एग्जामिनर कि आपको पता है कौन सी गैस आ रही है. ठीक है. सो दिस इज देयर फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसिड. अब सोचो, वी कुड यूज दिस रिएक्शन टू चेक कि मेटल कितना रिएक्टिव है. क्योंकि अगर दो मेटल्स को चेक करना है, सिंपली दोनों को एसिड में डालो, पता लग जाएगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है. दिस इज एटीपी. एटीपी में इस तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा कि अच्छा, हाउ डू यू रैंक मेटल्स in order of reactivity? Simple. You take one metal, you take another metal, put both of them in the same acid. Whichever produces bubbles faster, that is more reactive. अच्छा, we could also use this to check if a liquid is acid or not. आपको एक unknown liquid दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि अच्छा, आप check करें if this is acid or not. So you'll be like, okay, no problem. Take that liquid, add a small piece of sodium to it. If there's bubbles coming out, check them with a flame. If it pops, that is hydrogen gas, which confirms that you have acid in the liquid. Okay? So these are two important ATP questions that are associated with it. So ATP questions एक ये हो सकता है, and I would suggest कि आप उसको लिखें अपने answers को, and I will check them, of course. So first one is that use determine the reactivity of two unknown metals A and B. ठीक है? And you have access to metal ribbons, HCl, and lab equipment. So this is one question you should try to answer. This will be a 3 or a 4 mark question. Second ATP question that is relevant to this. Test to confirm if an unknown sample of a solution contains acid. Okay. So this you can, both of these questions, this question will just be a 2 or a 3 mark question. Okay. So you should try to answer these questions.